Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers. Today we will discuss about one of the most important history in the pregnant woman, which is the hypertension in pregnancy. Either it be a chronic hypertension, gestational hypertension, pre-eclampsia or eclampsia. So this is one of the easiest template and include all the details of how to take history. First of all, always go through the biodata. Then the presenting complaint. Patient with the hypertension in pregnancy can come with any of the following complaints, which include either headache, abdominal pain, more specifically epigastric pain or right hypochondrial pain, blurring of vision, vomiting, fits, which can lead to eclampsia, uncontrolled hypertension on home record, or either rearranged labs, which can be either causing the HELP syndrome or subclinical DIC or any thrombocytopenia, intrauterine growth restriction. If the patient is admitted, inquire about the date of admission and how she was admitted, the mode of admission. For the history of presenting illness, inquire about the details of the hypertension, the onset, either before the pregnancy or during pregnancy, duration, the type of hypertension if you can rule out on the history, how it was diagnosed, antihypertensive agents and its details, including type of drugs, dose, its compliance, very important, and the side effects. For instance, orthostatic hypotension. Whether her blood pressure is controlled or uncontrolled, any preconception counseling done with her medical doctor or not, whether her blood pressure was controlled before conceiving, drugs have been changed before conceiving, or any investigation done. In the associated factor, inquire about headache, blurring of vision, abdominal pain, pedal edema, abdominal wall edema, periorbital puffiness, frothy urine, and in decreased urine output. To rule out the subclinical DIC or the bleeding diastasis, inquire about petechiae, bruises, epistaxis, bleeding, antepartum hemorrhage, and hematuria. Then for the complications caused by the hypertension, for instance, hypertensive nephropathy, inquire about the symptoms and signs of pedal edema, facial puffiness, decreased urine output, foamy urine. Any investigation done so far, for example, urine complete investigation and renal function test. To rule out hypertensive vasculopathy, ask about the complaint of chest pain, shortness of breath, orthopnea, and PND. For the hypertensive retinopathy and its grade, rule out blurred vision, blindness, flashes of light, any fundoscopy done or not. For the fetal complications, including oligohydramnios and intrauterine growth restriction, inquire the patient, although it's an examination finding, but still ask the patient whether her doctor has told her regarding any amount of decreased amount of liquor or any growth disparity on scan or on examination. Trimester-wise history has already been discussed. During the admission, these are the PET questions for any patient who has been admitted for any problem in the pregnancy. Inquire about any treatment taken, whether oral and injectable, any regime changed from previous one, blood pressure monitoring in the ward stay, whether the BP is controlled or not. Any hypertensive episode with a new regime, for instance, the orthostatic hypotension caused by the different antihypertensive agents, any side effects, any complaint of headache, dizziness, symptoms are relieved or not, whether the patient is feeling better, investigations done so what, for instance, ultrasound, 24-hour urinary protein to creat ratio, any urine dipstick done in the ward or not. Discuss the mode of delivery and contraception if the patient is at term. Ask for the steroid cover. In the obstetric history, inquire about the previous history of pregnancy-induced hypertension, any preeclampsia, eclampsia, and any pregnancy complications associated with the hypertension previously. In the gynae history, inquire about the contraception and history of polycystic ovarian disease, since it is a metabolic disease and it can cause the metabolic syndrome. In the past history, to rule out the cause of any chronic hypertension, besides being the essential hypertension,
Inquire about any history of hypertension, diabetes, Cushing syndrome, autoimmune syndrome, any thyroid problem, both hyper and hypothyroidism, pheochromocytoma. In the drug history, inquire about any history of antihypertensive agents, any routine medication, any steroid intake history, or any painkillers, for instance, NSAIDs. In the family history, ask about the hypertension in the first degree relatives. In the personal history, inquire the dietary habits, whether salt restriction has been done by the patient or not, any history of smoking or any other cocaine abuse or any other recreational drug abuse. So these are the risk factors for the preeclampsia according to the NICE guideline. And these are the causes of the secondary hypertension. Most common cause of hypertension being the primary or the essential hypertension. And these are the causes of secondary hypertension, which includes thyroid, Cushing's pheochromocytoma, Crohn's disease, carcinoid tumors, and autoimmune problems. So if this is the easiest most template of hypertension in pregnancy, if some of you have requested to produce it in the Urdu language as well, to be easily asked by the questions in the local population. So let's repeat it in the Urdu. You can ask about the biodata. नाम, आपके शौहर का नाम, शादी को कितना अर्सा हुआ है, क्या खानदान में शादी हुई है, आपकी उम्र कितनी है, पहले कितने बच्चे हैं, ये कौन सा हमल है, या पहले कोई हमल जाया या फौत हुआ है, छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, माहवारी की आखिरी तारीख क्या है, देन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, देन इंक्वायर आपकी तालीम कितनी है, आप क्या काम करती हैं, आपकी रहाइश कहाँ है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। पेशेंट कैन कम विद एनी ऑफ द कंप्लेन कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे आंखों के आंखें धुंधला नजर आ रहा है, या नजर कम आ रहा है, या नजर नहीं आ रहा, उल्टियां आ रही हैं, या झटकों के साथ पेशेंट आती है, या घर का रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर का उनका खराब है, या उनकी लैब्स खराब है, या बच्चा छोटा बताया है डॉक्टर ने। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में यू विल आस्क ब्लड प्रेशर का मसला हमल से पहले है या हमल में शुरू हुआ था, कितना अर्सा हो गया, अगर हमल में शुरू हुआ तो किस महीने में शुरू हुआ था, ब्लड प्रेशर किस टाइप का, यू हैव टू रूल आउट ऑन द हिस्ट्री, बेसिस ऑफ द हिस्ट्री। आपने भी पूछना है कि ब्लड प्रेशर कैसे डायग्नोज हुआ था, कि बीपी के लिए कौन सी दवाइयात ले रही हैं, बाकायदगी से लेती है, उससे कोई मसला तो नहीं होता, क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, क्या हमल से पहले आपने अपने डॉक्टर से पूछा था हमल करने के लिए, कोई टेस्ट करवाए थे, कोई दवाइयात दी थी, क्या हमल से पहले ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल था। फिर एसोसिएटिव फैक्टर्स में क्या सर में दर्द तो नहीं रहती, आपको नजर ठीक आता है, पेट में दर्द रहती हो, पाँव में सूजन भर गई हो, पेट की जेल में सूजन भर गई हो, क्या चेहरे पे या फिर आंखों के गिर्द सूजन हो जाती हो, पेशाब में झाग आती हो, पेशाब कम आता हो। फॉर द ब्लीडिंग डायग्नोसिस यू कैन आस्क के जिस्म पे धब्बे दाग तो नहीं पड़ते, नील तो नहीं पड़ता, नाक से खून आता हो, माहवारी के रास्ते से खून आता हो, या पेशाब में खून आता हो। और द कॉम्प्लिकेशंस पूछे कि क्या कोई पेचीदगी तो नहीं हुई इस वजह से, फॉर इंस्टेंस के गुर्दों का कोई मसला हुआ हो, या पाँव में सूजन भर गई हो, चेहरे पे सूजन आ गई हो, पेशाब कम आता हो, पेशाब में झाग आती हो, कोई टेस्ट करवाए हो जिसमें पेशाब का टेस्ट या गुर्दों का टेस्ट मौजूद हो, सीने में दर्द रहती हो, सांस खराब होता हो, लेटने से सांस खराब होता हो, या फिर रात को सोते में एकदम से उठ जाते हो सांस के मसले की वजह से। फॉर द रेटिनोपैथी इंक्वायर अबाउट नजर ठीक आता है, धुंधला तो नहीं आता, नजर कम आता हो, आंखों के आगे रोशनी चमकती हो, ये टेस्ट करवाया है आंखों का आपने। फॉर द फीटर कॉम्प्लिकेशन आज के क्या डॉक्टर ने आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड करते वक्त कि आपकी डॉक्टर ने कि आपके बच्चे के पेट पानी कम है, या बच्चे की जो निशोनुमा है वो दिनों के लिहाज से कम हो रही है। अगर आप अस्पताल में then trimester by history, which I have already mentioned, during the admission in the hospital, I inquire about कि अस्पताल में दाखिले के दौरान में आपका बीपी क्या इलाज किया गया, दवाइयाँ दी गई या टीके लगाए गए बीपी को कंट्रोल करने के लिए, बीपी कितनी दफा चेक होता है, क्या दवाइयाँ दी गई हैं, इससे कहीं आपका बीपी कम तो नहीं होता। टू रूल आउट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इंक्वायर दैट आपका एकदम से लेटने से बैठने में और बैठने से उठने में ब्लड प्रेशर बीपी कम लो हो जाता हो, या चक्कर आते हैं, या तो दिस इज हाउ यू कैन रूल आउट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करने से कोई सर में दर्द या सर भारी होता हो, नींद बहुत ज्यादा आती है, कोई और मसला तो नहीं हो रहा, क्या अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं, क्या आपके कोई टेस्ट गए हैं जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड
या आपका 24 घंटे का कोई पेशाब का टेस्ट किया है, आपका रोजाना वार्ड में स्ट्रिप के जरिए पेशाब का टेस्ट होता है, पेशाब की चर्बी का। अगर पेशेंट इज एट द टर्म, तो आपने पूछना है कि आप किस तरह से अपनी डिलीवरी चाहती हैं और वक्फे के लिए कौन सा है। फिर पूछिए फॉर द स्टीरॉयड कवर, कि आपके 12 घंटे के वक्फे से खूले में कोई बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला कोई टीका लगा है। इन द ऑब्स्टेट्रिक इंक्वायर, कि क्या पिछले बच्चों में भी आपको ब्लड प्रेशर का मसला रहा है या झटकों का मसला, या उस पर कोई पेचीदगी होती हो। इन द गायनी हिस्ट्री, वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं, कि आपके अंडे दाने में पानी की थैलियां का मसला तो नहीं है। इन द पास्ट हिस्ट्री इंक्वायर, कि आपको शुगर ब्लड प्रेशर का मसला या फिर आपको कुशिंग डिजीज फॉर इंस्टेंस, क्या काम में कोई हकीम की दवाई खाई हो, या आपकी जल्द खराब हो जाती है, जिसम के धब्बे बन जाते हो, या स्टीरॉइड्स आप, या सफेद चावल के दाने जैसे सफेद गोलियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हो। लेकिन ऑटोइम्यून हिस्ट्री, कि आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता है, जिसम पे निशान पड़ जाते हो, या सर के बाल उतर जाते हो, बुखार होता हो, मुंह में छाले बन जाते हो, खून की कमी का मसला हो। फॉर द थायराइड, आपने हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों की रूल आउट करनी है। एंड द फ्यू क्रोमोसाइटोमा में आपने पूछना है कि आपको एकदम से सर में दर्द तो नहीं शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज महसूस होती हो, एकदम से पसीना आ जाता हो। इन द ड्रग हिस्ट्री, आप ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी दवाई आप इस्तेमाल कर रही हैं, हकीम की कभी दवाई इस्तेमाल की है, चावल के दाने से सफेद गोलियां जो कि स्टीरॉइड्स हैं कभी वो इस्तेमाल की है, या दर्द की गोलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करती, टू रूल आउट द पेन किलर्स एंड द एनसेड्स। इन द पर्सनल हिस्ट्री इंक्वायर अबाउट कि खुराक में क्या लेती हैं, क्या आप नमक से परहेज करती हैं, माजत के साथ सिगरेट नोशी, पान गुटखा या कोई और चीज तो नहीं इस्तेमाल करती। So these are the risk factors and the causes of the hypertension and the clinical presentation, including thyroid problem, Cushing disease, pheochromocytoma, Pounds syndrome, carcinoid tumor, and autoimmune syndrome. So this is how you can take the history of hypertension in pregnancy. For more details and the more history templates, do subscribe the channel. Thank you and good luck.